Good morning, all my dear children. Children, today we are going to start the fourth lesson of English. That is, which one? Tommy has a tummy ache. Listen, children. We are going to start the fourth unit of English. Tommy has a tummy ache. So, what are the points about the Tommy and his tummy ache that we are going to see? Let's start, students. Tommy was a lazy boy. I'm going to read. You listen carefully. If you have textbooks with you, you can see in the textbooks. Tommy was a lazy boy. He loved to sleep. His mom had to shake him every morning. She would say, "Get up, Tommy." "Let me sleep, Mom," Tommy said. "Only 2 minutes more." Again she said, "Get up right now," said Mom. "You will miss the bus. You will be late for the school again." See, children, every time it happens with you also. I know very well. When our parents are going to wake up you, we are saying, "Just 2 minutes, Mom. Just 5 minutes, Mom. I will get up." Like that. Tommy is a boy in this lesson and he is so lazy boy. Okay. He likes to sleep. He loved to sleep every time because he was a lazy boy, and his mom had to shake him every morning. His mom had to shake him every morning means what? हर दिन उसकी माँ उसको ऐसे हिला हिला कर उठाती थी कि उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई, गेट अप टॉमी. बट ऑलवेज ही वॉज सेइंग, "लेट मी स्लीप मॉम, let me sleep mom, only 2 minutes more mom." He was every day saying that only. Okay, so again his mom said, "Get up right now, you will miss the bus, you will be late for the school again." फिर से उसकी मम्मी बोलती है कि अभी तो उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, बस निकल जाएगी स्कूल की. योर पेरेंट्स ऑल्सो सेइंग ना, सेम है. So Tommy's mother was saying every morning and shaking him every morning that he should get up. But Tommy was always saying, "Only 2 minutes, only 2 minutes more, Mom." And after some time, Tommy got up. He did everything very slowly. When he was ready, he went to the dining table for breakfast. जब उसके मम्मी ने उसको हिला हिला कर उठाया, that time he got up late. Okay, and Tommy got up and he did everything very slowly. पहले ही उसको हिला हिला कर उठाना पड़ा, और जैसे ही उठ गए उसने क्या किया? फर्स्टली ही वेंट टू द डाइनिंग टेबल फॉर द ब्रेकफास्ट, एंड बिफोर दैट ही डिड एवरीथिंग वेरी स्लोली. मतलब जो भी उसके पर्सनल वर्क थे मॉर्निंग के, वो सब उसने क्या किया? बहुत स्लोली कर दिया. टॉमी लव टू ईट. ही एट अ बिग बाउल ऑफ सीरियल. टॉमी लव टू ईट. उसको खाना बहुत पसंद था. तो दैट डे ही एट अ बिग बाउल ऑफ cereal. He drank a large mug of milk. He ate 3 toast with lots of butter and jam. उसने क्या क्या खाया ब्रेकफास्ट में? See once again. Tommy loved to eat. He ate a big bowl of cereal. He drank a large mug of milk. बिग बाउल ऑफ सीरियल उसने खाया. फिर उसके बाद क्या किया उसने? अ लार्ज मग ऑफ मिल्क ड्रैंक किया, मतलब बड़ा सा मग दूध पिया. ही एट 3 टोस्ट विथ लॉट्स ऑफ बटर एंड जैम. और उसके साथ उसने 3 टोस्ट भी खाए. टोस्ट के साथ क्या खाया? खाया बटर एंड जैम. इतना सब कुछ खाया उसने इन द ब्रेकफास्ट. हिज मॉम वांटेड हिम टू ईट सम फ्रूट्स. एवरी मॉम वांट्स to eat the fruits her children. Okay, so his mom also wanted him to eat some fruits. Tommy does not like to eat the fruits, but Tommy को fruits पसंद नहीं थे. He went to the kitchen and quietly filled his pockets with chocolate chips cookies. Mom was giving him fruits for the breakfast, but he
didn't like the fruits, and he went quietly into the kitchen. And what did he do there? उसने क्या किया वहाँ पर? He filled the pockets with the chocolate chips and cookies. Okay, he walked slowly to the bus stop. The bus was already there. The bus conductor said, "Come on, Tommy, hurry up. It is getting late." टॉमी किचन में गया, मम्मी ने जो फ्रूट्स दिए थे वो उसने नहीं खाए, फिर उसने क्या किया, चॉकलेट चिप कुकीज़ क्या किया, पॉकेट में भर दिए उसके। और वहाँ से वो स्लोली बस की तरफ निकला। व्हेन ही रीच्ड देयर, बस वाज ऑलरेडी देयर। बस पहले से ही उधर आकर खड़ी थी। देन द बस कंडक्टर सेड, व्हाट डिड ही से? बस कंडक्टर सेड, "कम ऑन टॉमी, हरी अप, इट इज़ गेटिंग लेट." उसने बोला कि जल्दी करो टॉमी, लेट हो रहा है। देन टॉमी फेल्ट वेरी स्लीपी। टॉमी फेल्ट very sleepy in the class. Finally, he reached into the school, into the class, and there he was feeling very sleepy. Means उसको बहुत नींद आ रही थी वहाँ पर। Many times the teacher said, "Wake up, Tommy. Listen to what I am saying." And when he was feeling sleepy in the school, when he sleep into the school class, his teacher always says that, "Wake up, Tommy. Listen to what I am saying." टॉमी मत सो जाओ, उठो, मैं क्या बोल रही हूँ सुनो। एवरी टाइम ही वॉज सेइंग, एंड अगेन शी वॉज सेइंग, फिनिश योर वर्क टॉमी, एंड देन शी सेड द मैजिक वर्ड्स। ये सब तो वो हमेशा बोलती थी, बट दैट टाइम शी सेड द मैजिक वर्ड्स। विच मैजिक वर्ड्स? लिसन नाउ, सी दिस सेंटेंस। She is saying, "Get up, Tommy. It's lunch time. Get up, Tommy. It's lunch time." Got up. When teacher said to the Tommy, "Get up, Tommy. It's lunch time." Tommy got up really fast. He was out of the door and in the cafeteria before anyone else. जब टीचर रोज़ रोज़ बोलती थी उसको कि टॉमी उठ जाओ, मत सो जाओ क्लास में, कंप्लीट योर वर्क, फिनिश योर वर्क, दैट टाइम टॉमी वॉज नॉट गेटिंग अप, बट वंस टीचर यूज्ड मैजिक वर्ड्स। विच मैजिक वर्ड्स? गेट अप टॉमी, इट्स लंच टाइम। जैसे ही टॉमी ने सुना कि ये लंच टाइम हो गया तो वो जल्दी से उठ गया और भागते भागते वहाँ कहाँ पर पहुँच गया? कैफेटेरिया में पहुँच गया। मतलब उसको खाना बहुत पसंद था। ही लव टू ईट, दैट्स वाई he heard the teacher said it's lunch time and he got up very fast and went into the cafeteria. Cafeteria means जहाँ पर सब लोग मिलकर टिफिन खाते हैं। ओके, so student, it was the first page of that fourth unit. Again one page left beta, that I will teach you in the next video. Okay, it is too lengthy lesson, so one by one I will teach you. So what you have to do, students, you also read this lesson. Hard words already I sent you, that you write in the notebook, and remaining part we will see in the next video. So we are going to stop here, children.